Good morning, students. Now, today in the statistics, now look at page number 17 in your textbook. Now, there are some formulas are given. So, you learn out that formula that from 1, this is the 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 में all. So, learn from 1 to 6 all formulas because this will be applicable in the sums also. So, you learn out all these formulas. राइट ये अभी मैं पढ़ूँगी तो सिर्फ पढ़ने में समझ में नहीं आएगा बट यू लर्न आउट ऑल दिस formulas. Sum number 15 now in the exercise number 1.2. First of all, we read out the sum that two cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that. There are three probabilities are given to find out. First one, that is both cards are of different color. Both the cards are face cards and one of the two cards, that is a king. Right, so now we will solve the sum. First of all, in the sum it is given, first of all there are four parts of cards: club, spade, heart and diamond. We have to select any two cards from a well shuffled pack of cards. So there are 52 cards that comes in a pack of cards. उसमें से दो लेने हैं. We have to select. So C we apply 52 C2. इसका आंसर आएगा 1 3 2 6. So that is our N. Means total outcomes. Now first case is both the cards are of different color. Now से आपको पता है कि ये उसमें रेड एंड ब्लैक दो ही कार्ड्स होते हैं. रेड के 13+13 एंड ब्लैक के 13+13. तो 13+13 कम्स 26. तो रेड में से एक लेना है, ब्लैक में से एक लेना है. हम कोई भी ले सकते हैं, राइट. इसलिए टोटल 26C1 मल्टीप्लाई बाई 26C1. So that comes 676. Probability of P of A, that is M upon N, so 676 upon 1326. Now the next is, second case is, both the cards are face cards. Now there are total 12 face cards, total 12 faces cards that comes in a pack of a card, right. Club में 3, right, that Jack, Queen and King. इसमें भी जैक, क्वीन एंड किंग. इसमें भी 3, इसमें भी 3. तो 3 3 3 3 12 हो गए. 12 में से फेस कार्ड में से दो लेने हैं. यहाँ पे बोला नहीं है कितने लेने हैं, बट यहाँ पे बोला है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड. सो वी हैव टू सिलेक्ट एनी टू कार्ड्स. ऑफ 12 C2 कम्स 62 सॉरी 66. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज दैट इज M अपॉन N. So 66 upon 1326. So this is our answer. Don't make it shorter, keep this as it is, right. So do not waste your time in making this more shorter. The next one is one of the two cards is a king. One of the two cards, दो कार्ड सिलेक्ट करने हैं. टू कार्ड्स में से एक कार्ड किंग का होगा और दूसरा कोई भी अदर कार्ड होगा, राइट. अभी देर आर 4 किंग्स. क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड के 4 किंग्स. उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, राइट. और इसमें से बाकी के भी कितने बचे, 48 कार्ड्स. कैसे, 4 किंग है तो बाकी के 48. तो 52 माइनस 4, इस तरह से 52 माइनस 4. तो 48 में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, राइट. तो हो जाएगा 4C1 मल्टीप्लाई बाई 48C1. that comes 192. So now we apply probability of C, M upon N. So 192 upon 1326, right. So this is our answer. So this is sum number 15. Sum number 16 now. 3 bulbs are defective in a box of 10 bulbs. 2 bulbs are randomly selected from this box. So this is for the sample space, this is for the N. The bulbs are fixed in 2 bulb holders. 2 bulb holders दिए हैं installed in a room. Find the probability that the room will be lightened after starting the electric supply. Right? So now first of all we find out that N 10 bulbs are given. 3 are defective, 7 are non-defective. We select any 2 bulbs from the 10 bulbs. So N becomes 10 C2 comes 45. Now what is the event is given? Event that the room will be lightened after starting the electric supply. Now how do we select this?
फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों के दोनों नॉन डिफेक्टिव ले लें, मतलब चालू बल्ब ले लें, सो दैट कम्स 7C2, राइट। अभी इसमें से बोला नहीं है डिफेक्टिव सिलेक्ट करो नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करो, तो हम तो बाई चांस कोई भी सिलेक्ट कर ले, तो 7 में नॉन डिफेक्टिव में से एक सिलेक्ट करें, डिफेक्टिव में से एक सिलेक्ट करें, दैट इज़ द अदर केस, राइट। सो 7C1 मल्टीप्लाई बाई 3C2, दिस इज अवर फर्स्ट केस, फर्स्ट इवेंट, दिस इज अवर सेकंड इवेंट, राइट। दोनों के दोनों या फिर नॉन डिफेक्टिव हो, मतलब चालू बल्ब हो, एक चालू हो एक नहीं चालू हो। सो 7C1 मल्टीप्लाई बाई 3C1, इसका आंसर जाएगा 21 + 21 कम्स 42। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज m upon n, so 42 upon 45. Sum number 17 now. Two events A and B in a sample space of a random experiment, that is P of A 0.6, P of B 0.5 and P of A intersection B 0.15. Find. There are 5 events that is given to find out. P of A dash, P of B minus A, P of A intersection B dash, P of A dash intersection B dash, P of A dash union B dash. इसके लिए हमने ये जो अभी लिस्ट ऑफ फार्मूला देखी है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ दिस इज द टाइम टू अप्लाई दैट फार्मूलाज, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट P of A dash, for that there is a formula that 1 minus P of A, value for P of A that is given, so 1 minus 0.6 or 0.4. P of B minus A, for that there is also formula P of B minus P of A intersection B, values put up करो, आंसर फाइंड आउट करो। P of A intersection B dash, there is a formula P of A minus P of A intersection B, both the values are given, put up and find out answer. Now this is P of A dash intersection B dash, for that there is a formula that 1 minus P of A union B. For the 1 P of A union B, there is also another formula, that is P of A plus P of B minus P of A intersection B. All the values are given, 0.6, 0.5, 0.15, so that comes 0.95. Now we put up this A union B into this formula, so 1 minus 0.95 comes 0.05. This is our answer. Now P of A dash union B dash, for that there is a formula that 1 minus P of A intersection B, 1 minus 0.15, so comes 0.85, right. So this is an easy if you know the formulas. Last sum of this exercise. For two events A and B in a sample space of a random experiment, P of A dash is equals to 2P of B dash is equals to 3P of A intersection B 0.6. Find the probability of difference event A minus B and A B minus A. First of all, this kind of equation is given, so now we split this equation. P of A dash that equals to 0.6, 2P of B dash that equals to also 0.6, right. तो ये 2 को इधर डिवीजन में ले ले तो आ जाएगा 0.3, so P of B dash now 0.3, 3P of A intersection B comes 0.6, 3 को हम इधर डिवीजन में ले ले तो आ जाएगा 0.2, तो इसको स्प्लिट कर दिया, इंडिविजुअल वैल्यूज़ मिल गया। Now we find out A minus B, P of A minus B, there is a formula for that, P of A minus P of A intersection B. P of A is not given directly, so we find out 1 minus P of A dash, that is given, minus P of A intersection B. All the values we have, put up values and find out answer. P of B minus A, for that also P of B minus P of A intersection B. P of B is not given, P of B dash is given, so P of B means what, 1 minus P of B dash. This ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली दी है, तो वी कीप दिस एज इट इज, सो पुट अप वैल्यूज एंड फाइंड आउट आंसर, राइट. सो दिस इज ऑल्सो एन ईजी सम इफ यू नो द फॉर्मूलाज टू अप्लाई. So exercise 1.2 that is over here, so write down all the sums in your notebook, do practice yourself, right. Okay, so see you tomorrow.